can't, or they have so much in their heart that they want to just say it out loud. So what will happen कि उनको ना chest में pain होने लग जाएंगी, they will feel heavy on their chest, or they will be wanting to talk a lot, right? ऐसे भी होता है. सो डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, जैसे गट प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक इश्यूज होते हैं, नॉशियस फील होता है, डायरिया हो जाता है, और या आपके ये बाउल सिंड्रोम होने के भी चांसेस हो जाते हैं. ठीक है. Then we have sleep disturbances. So either it is insomnia where the person just can't they just can't sleep at all, or either they'll be sleeping a lot, like in number of hours they'll be sleeping a lot. Okay, so difficulty in falling and staying asleep, or a lot of nightmares that they'll be facing. Then the last one that the person has been going through is behavioral symptoms. Okay, so in behavioral symptoms, and there are avoidance behavior, avoiding in all the situations, works, responsibilities, due to the fear that they are been having. As we said before, in the emotional, so emotion में आपका behavior में वो fear आता है, ठीक है. Then compulsive habits. Okay, so if you see, then OCD is a part of anxiety disorder. Okay, so compulsive habits is a behavioral symptom where excessive checking or reassuring, or going to the locks and constantly checking it, or if something has been made in the oven, so they'll go to the oven and then they'll constantly check it, अच्छा जला तो नहीं, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ. फिर रीअश्योरेंस उनको सीख करनी होती है कि अच्छा ये इंसान मुझे पसंद करता है, नहीं करता है, क्या होता है, so that is also something that they have been going through. Then rituals to reduce anxiety. Okay, they'll be doing that. So for example, if they have been doing something to reduce their anxiety, like for example, if they'll be doing a lot of puja, or they'll be doing journaling, so that will be very excessive in nature. Okay, so with them it's nothing moderate, it's either extremes, they'll be going this way or that way. फिर आता है procrastination. Okay, so delaying important task due to the performance anxiety that they have been facing. Okay, कि ठीक है, देखी जाएगी, हो ही जाएगी, कर लेंगे, फ्यूचर में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे टाइप्स. ठीक है. फिर restlessness और pacing. Okay, so constant fidgeting, difficulty in sitting still. फिर seeking constant reassurance, asking for validation from friends and family, or authority figures. So, with these symptoms of anxiety disorder, there have been other types of anxiety disorders also, and we have already done this in the past when we have been studying, right? Especially in the class 12th. So with the first anxiety disorder, if we talk about, it's GAD, generalized anxiety disorder, right? So there are like excessive worry, multiple aspects of work, work, relationships, health, right? So there is constant worry. So feeling anxious, but feeling anxious for a very long time is generalized anxiety disorder, and they are generalized मतलब जनरली उनको जिंदगी में एंग्शियस फील हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्क, रिलेशनशिप्स, लाइफ एस्पेक्ट्स और लाइफ डिसीजंस इन जनरल. Then physical symptoms like muscle tension and headaches, fatigue and all of that. मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं लाइक कैटास्ट्रोफाइजिंग, कि मुझे तो ना पूरी दुनिया ही नहीं पसंद करती है, पूरी दुनिया ने मुझे हमेशा धोखा दिया. दे आर जस्ट कैटास्ट्रोफाइजिंग एवरीथिंग, कि सारा बोझ तो मैं ही उठा रहा हूँ जिंदगी. और इधर दे विल बी सेइंग कि इनडिसाइसिवनेस है, देयर इज एन इनडिसाइसिवनेस इन वॉट एवर दे आर सेइंग, कि हाँ ठीक है करेंगे, फिर वो बोलते नहीं हम बाद में करेंगे, ये करेंगे. देन डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग. फिर आता है हमारा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में हमारा इंटेंस फियर ऑफ बीइंग जज्ड और एम्बैरेस्ड इन सोशल सिचुएशंस, अवॉइड्स पब्लिक स्पीकिंग और ग्रुप एक्टिविटीज और मीटिंग न्यू पीपल ऑल्सो.
ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं आपके? इसमें आपका ब्लश आ जाता है, या स्वेटिंग होती है, ट्रेमलिंग होती है, कभी कभी आप ऐसे सोशल सिचुएशंस में जाते हो तो एकदम फ्रीज हो जाते हो, यू नो, यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। फिर आता है हमारा पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पे सडन एंड इंटेंस पैनिक अटैक्स अ पर्सन गोस थ्रू। ठीक है, तो विद फिजिकल सिम्टम्स दैट मिमिक अ हार्ट अटैक। मतलब आपको एकदम चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चोकिंग सेंसेशंस, लूजिंग कंट्रोल, ये सब होता है आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे ये डेवलप होता है अ फियर ऑफ हैविंग of another panic attack, of or losing control or losing your life also, because earlier you think कि अच्छा ये तो हार्ट अटैक था, बट यू नो मैं ये नहीं हो जाऊंगा, वो वैसा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वो एंटिसिपेटरी एंजाइटी और डेवलप हो जाती है इस चक्कर में, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, सो एंटिसिपेटिंग कि मुझे ये सब हो जाएगा। Then obsessive compulsive disorder, right? So OCD में क्या होता है कि intrusive thoughts होते हैं, as we said OCD is a part of anxiety disorder, right? So intrusive and distressing thoughts होते हैं, obsessive thoughts होते हैं, and compulsion में आता है, जैसे हमने बोला था that there वो compulsion of that particular behavior है, right? कि मैं कॉन्स्टेंटली जाके चेकिंग करूंगा, रीचेकिंग एंड डूइंग दिस डूइंग दैट। तो मन में जब तक चल रहा होता है वो भी कॉन्स्टेंटली है, बट वो बिहेवियर भी वो कॉन्स्टेंटली है। So yeah, and the last one in anxiety disorder, as we have already done this, is PTSD, post traumatic stress disorder. It is related to different kind of situations. Okay, so trigger आपका past trauma होता है in any way. Okay, so it can be an accident, it can be an assault, it can be from a war or loss or any abuse, and flashbacks, nightmares, emotional numbness, hypervigilance, ये सब आते हैं इन सब में। ठीक है, ये सारे आपके symptoms, and these are all your symptoms and types of anxiety disorder. Okay, so I hope anxiety disorder is something which is clear to you. Then, while not traditionally used for anxiety disorders, but DBT emphasizes on mindfulness, as we have already discussed in the whole course, that DBT just emphasizes on mindfulness and distress tolerance. Can be benefit individuals experiencing। ठीक है, तो जहाँ पे हम इमोशनल टॉलरेंस एंड डिस्ट्रेस टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को और बेनिफिट करता है बाय हेल्पिंग देम मैनेज ओवरवेलमिंग इमोशंस एंड रिड्यूस द अवॉइडेंस बिहेवियर। ठीक है, जैसे हमने किया है कि वो अवॉइडेंस बिहेवियर आ जाता है, वी वांट टू नॉट pursue that. Okay, so DBT आपको मदद करता है to be more mindful about your thoughts, especially when you're going through a panic disorder, you know. So DBT कैसे हेल्प करता है कि आप जब माइंडफुलनेस करते हो तो ग्राउंडिंग टेक्निक होती है। ठीक है, दैट 5 4 3 2 1, जहाँ पे 5 things that you've been seeing, 4 things that you can 4 things that you can 5 things that you can see, 4 things that you can touch, 3 things that you can like you know hear, 2 things that you can smell, and 1 thing that you can taste. ठीक है, so इससे क्या होता है that all of your 5 senses have been triggered. So when a person is going through attack, and they have been going through a panic disorder, a panic attack, तो उससे क्या होता है that they have been feeling very overwhelmed with a lot of emotions. Okay, and जब वो overwhelming feeling हो जाती है, तो ग्राउंडिंग टेक्निक उनको हेल्प करती है टू जस्ट calm themselves down and focus on the present moment, which is extremely helpful. सबसे ज्यादा पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक में हेल्प करता है जब पैनिक अटैक आ रहा होता है, सो यू जस्ट होल्ड आइस। सो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द कोर्स कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे हमारी बॉडी एकदम शांत हो जाती है। ठीक है, हमें हमारी बॉडी फोकस करती है ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके, रादर देन गोइंग haywire with a lot of emotions. All right.